हमारी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, and I have observed myself and I asked for so many times from the people who are in this कि क्यों तो कहते हैं ना मैडम आप देते हैं ना हम देते हैं, सरकारी पानी है, सरकारी बिल है, डन है. So please we have to stop such type of things. Then still there are various industries which are water intensive, and with intensive being extensively using the water, and if we talk about to produce 1 ton of the paper, it takes 54,000 liters of water. And क्या करते हैं हम पेपर के साथ पेजेस फाड़ के भेजना, and how to treat we रजिस्टर के साथ हम लोग क्या करते हैं, या ये है कि फ्री पेजेस मिल जाते हैं, अब हमारी मर्जी है उनको फाड़े नहीं किया जाता है, but how difficultly they are prepared और उसमें कितने resources consume होते हैं. And one pair of leather shoes that you are wearing, it can consume about 8,000 liters of the water, and same as it is for the cotton shirt that you are wearing, and it takes about 3,000 liters of water. And tin of cola can contain about 0.35 liter water, and same as it is for the sugar. So here is the question: is this mask for a country who is already in the condition of water crisis? Think about it. What we have to do, we have to save the water. We have, because only 1% of water is fresh water which is available for the factories, for the agriculture and for the domestic purposes. And this is related to the, if we have 100 liters of the water around the world, so only a half tablespoon of the water is available. So how to save it, it's up to you now. How? Why to celebrate the water day? This is an event which points out the various of the billions of those people who are living without access to safe water, and it's also the day to take action that how to save water, and it's also to show the support and appreciate the fresh water which is only 1% or less than 1% around the world. Now for the year 2022, we have the theme that is the groundwater, and focusing on the groundwater that making the invisible as visible, because we cannot see the groundwater, but we cannot ignore the importance of groundwater, because we will be unable to survive on this earth. And why to save the groundwater only? Because this is a hidden treasure, and almost all the liquid and fresh water is stored as the groundwater. It is very minute, and because of the changes in the climate, we are going to moving towards the water crisis all over the world. And same here, we can say the groundwater may be out of sight, but it must not be out of mind. So feel the importance of the groundwater. What we have to do? आप लोगों ने इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो हर जगह देखी होगी, चाहे वो घर में है, चाहे वो कहीं पे भी हैं, कोई भी चीज ठीक नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो हम उसको मजीद खराब कर लेते हैं. So ordinarily can waste about 90 liters a week, and while brushing the teeth, जहाँ हम लोग का पसंदीदा मसला है 5-10 मिनट लेके फुल वॉल्यूम के साथ टेप खोल लेते हैं और पीछे में देख के ब्रश करते हैं. It can almost waste about 9 liters a minute, and 1 drop per second from a leaky faucet, it can waste about 3,000 gallons water per year. So we have to fix all those leaky faucets, and we have to replace and fix them. What we have to do, we have the green technologies, because solutions are possible, solutions are there to all the problems. And while adopting the green revolution, the green technology, we stay bold to save the water, to conserve the water sustainably. Still, there is an allocated innovation cycle that the government should play a role. Government should make the efficient policies, and then
they should provide the main power, the education institutions are strong institutions and management departments are the while financing them, so we will be able to put our own part. One Drop project is a field work framework which is working all over the world and now this project is trying to change the minds of the people that how to conserve the water, and it has also changed the condition of more than 2.3 million people worldwide. And since it has developed the new technologies for how to adopt the green technologies and revolutions, because together we can turn the water into action. Here are some few suggestions that awareness is important, and for the business sector, for the economies, for the Chamber of Commerce, and integrating water conservation in industrial and sectoral policies. Research is important. We came home to conduct researches to find and to adopt the green technologies. Universities, faculty, and students can play their part. We should change the curriculum by addition of such type of things and important issues, and the government should allocate a budget for all these things. But the most important, individually, everyone should play their role while change will happen, because little things can make a big difference. So, all of the 2 steps when brushing your teeth are cleansing the vegetables, take shorter showers, and don't use the extra water in the toilet, because on daily basis we can waste 9 gallons of water in the toilet. Save water, save life, because water gives life, and saving water today is saving our future. So now it's up to you. Thank you so much for this short brief. Questions, answer session will be. If you have any questions, you can ask by the end of this program. Thank you so much. One thing that Dr. Najashuma mentioned is that the careless attitude that specifically in this part of the world that people have towards water. We waste a lot of it and we do not realize that what we are doing. And if you look around you, the water resources are depleting. Look at Karachi, even in Islamabad, and Thar is another story. And it will reach there someday as well. That attitude needs to change. Now realize that in this environment where people do not care about it, and one club, Environment Green Club, gets up and arrange plantation drive, cleanliness week, waste management, water day, that's something extraordinary, because people do not realize its importance in the environment. Congratulations to you, madam. Congratulations to the team, the Environment Green Club, the whole club, for doing such a wonderful job. That's commendable. Moving on to our next speaker, Ms. Sana Hafiz. She is the Deputy Director of PMRU unit. She is also a PhD scholar in Geo-Environmental Sciences, University of Peshawar. Please welcome Ms. Sana Hafiz, the next speaker of today's event. Deputy Director of PMRU. Grateful once again, I'm here among all of you. Almost a year break, I think so. But I really missed the events which we were organizing here together along with the university management and Department of Environmental Sciences. And I'm really glad to see this society. I remember when I was here on my assignment at NSC Chota Lahore, and I discussed about this society with Dr. Huma Natish, and I asked about the society, met the society so that students get awareness about the environment or whatever kind of thing. Because I remember जब हम थे environmental sciences department में, तो हम इस societies के अंदर काम करते थे, and उसकी वजह से बहुत सारी awareness हमने create की. And more power to the society.
And ma'am, more power to you. हम आज ये कहते हैं वर्ल्ड वाटर डे पे, सो बहुत से फैक्ट्स आपको मैम ने बता दिए हैं। मैं बहुत क्या टू द पॉइंट बातें करूँगी, बहुत ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं होगी। आई अंडरस्टैंड सिटिंग देयर इज क्वाइट टफ, बट द थिंग इज आई ऑन द साइड ऑफ यू कैन से on the side of the government, or you can say on the side of the policy makers. Can you imagine, while I was here, almost every year, hundreds of ADB schemes related to water are here. Related to water, safe water, drinking water, availability of water to general public for drinking water. And can you imagine, I was just going through, last night I was just going through the researches that have been done in Swabi. Can you imagine your groundwater situation is worse, completely contagious with heavy metals accumulation. And why? Again, I will point out then, how many of you have sewage, proper sewage system in your houses? Anyone can tell me? किसी के घर में कोई सीवेज का प्रॉपर है, सेप्टिक टैंक्स बने किसी के घर में? I never saw a single home in 2 years in Swabi, and we were working on that. I remember. हम ये चाह रहे थे कि हम लोगों को इस तरफ लेके आएं कि वो अपने घरों में सेप्टिक टैंक्स बनाएं. And there is no septic tank almost, only except few houses. No septic tanks in Swabi. फिर इमेजिन करें कि वो एक्यूमुलेटेड वाटर आपकी ग्राउंड वाटर को जा रहा है, और जब वो ग्राउंड वाटर में जा रहा है तो वो क्या क्या एक्यूमुलेशंस आपकी ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंचती हैं, और वही पानी आप लोग पीते हैं. ये सिचुएशन एक सवाबी की है. सवाबी, दैट एरिया दैट इज अ स्मॉलर सिटी. देन इमेजिन द वर्स्ट कंडीशन गोइंग ऑन इन द बिगर सिटीज. इमेजिन अबाउट कराची, पेशावर, द मोस्ट पोल्यूटेड वन, लाहौर, Islamabad. Can you imagine that Islamabad water is no more drinkable? Even वो आपको बैलेंस की तरफ लेके जा रहा है. इतना वर्स कंडीशन हो चुकी है. पेशावर का पानी इज नॉट ड्रिंकेबल एनीमोर. हर बंदा ढूंढ रहा होता है कि मुझे कोई मिल जाए, प्लांट मिल जाए जो गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम लगाती है. क्या कहते हैं उसको? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स. वो मिल जाए, मैं वहाँ से घर के लिए पानी लेके जाऊँगा. Isn't it the case? हम सब यही करते हैं. Let's come to some quick issues of Pakistan. I was studying the Pakistan Council of Research in Water Resources. They conducted a research and they said that Pakistan is very close to scarcity, and it's almost threshold of 1,000 cubic meters due to current development processes. And the most critical processes, that is urbanization and population. Obviously population ज़्यादा होगी तो urbanization की तरफ तो हम जाएंगे कि हमारे पास रहने की जगह नहीं रहेगी. And Pakistan is among 36 water-stressed countries in the world. And since its gross water withdrawal is 74.4% of the total renewable water resources, जितने हमारे पास resources हैं उनसे 74% हम यूज़ कर रहे हैं. सोच लें आप कि आप 74%, अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप डेली बेसिस पे उससे 74 रुपीज़ यूज़ करते हैं, तो पीछे आपके पास क्या बचता है, कितना अर्सा आप उसको यूज़ करते रहेंगे. According to IMF, Pakistan will face absolute water scarcity in 2024, and we are in 2040. We are in 2022. According to IMF, again, Pakistan's per capita annual water shortage has slumped to 1,017 cubic meters from 1,500 cubic meters in 2009. Just imagine 2009 to onward from till 2022, how much we have done. Recent report in September 2021 shows that Pakistan water crisis has set up a series of water-related protests in different provinces of the country. Sindh is protesting, Balochistan is protesting, Punjab is protesting, and KP is also protesting about their water shortage. According to recently IMF, Pakistan ranks 3rd in the world among countries facing acute water shortage. A study conducted by UNDP and Pakistan Council of Research in Water Resources.
Similarly, in 2016, Pakistan was declared or touches the border stress line in 1990. एक स्टडी हुई थी 2016 में और स्ट्रेस लाइन आई थी 1990 में हमने वो क्रॉस की थी जब हम पे स्ट्रेस था। एंड 2005 में हम वाटर स्कार्सिटी लाइन क्रॉस कर चुके हैं। देन यू कैन इमेजिन हम किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान इज द वर्ल्ड फोर्थ हाईएस्ट रेट ऑफ वाटर यूज। मैम ने आपको बता दिया कि हम पानी कहाँ पे कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। And the amount of the water in cubic meters is very high as per unit of our GDP. This suggests that no country economy is as intensive than Pakistan. Again, you have just witnessed that we are facing a huge climate change effect. Recently, almost in a month or two, I don't know what happened in Swabi or not, we are witnessing the cloud burst in Peshawar, in different areas of Peshawar. Almost every other week, and this is a sign of the climate change. And due to this sign and high rising temperature, water is reducing day by day. About 90% of the water that supplies in domestic is what we are using in our daily life is fresh water, 90%. And most of the use that we are using in rural areas is almost 70% of the domestic water. 50% is used in agricultural activities and only 20% is available for safe drinking water. And you witness that among or out of that 20%, we still have to filter that water. I will highlight those policies that government so far made. In 2018, government started thinking about this water scarcity. And they made a policy in Punjab first. Punjab water policy in 2018. Then in Sindh made his policy, and recently in 2020, almost a year ago or 2 years ago, KP made his policy regarding water policy. So many departments are working on it. So many ADP schemes on yearly basis are again and again working for filtration of the water. But as far as as far as I am government sector, I never saw people talking about water shortage or to have something or to bring laws that can, वो कहते हैं ना, हमें जो थोड़ा सा वो डंडा दे कि हम पानी कम इस्तेमाल करें। हम पानी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे वो हमें मुफ्त में चीज़ बढ़ रही है। Can you imagine a recent study conducted by one of my research fellow in Quetta? क्वेटा में जब पानी के लिए वाटर उसके लिए पीने के पानी के लिए जब खुदाई की जाती है तो पानी आना बंद होता है। And you can witness it here in Swabi. If anyone of you just recently done it, you can tell me at what depth you got the water. 100 feet से नीचे चले जाएं आपको तब भी पानी नहीं मिलता है। Still you have to install a filtration plant. It's how much they are polluted. Once again, thank you. It's all from my side. Thank you so much. Thank you, sir. And it's really great to be here again. Thank you. Speaker of today's seminar is Dr. Neda Gul. She is working as assistant professor in the Department of Environmental Sciences, University of Swabi. She has a diverse experience of multiple countries for conducting research related to environmental sciences. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Neda Gul, assistant professor, University of Swabi. Year. The theme of this year is making invisible visible. So जो हमारा ग्राउंड वाटर है, it's invisible. जो हमारा ग्राउंड वाटर है, we couldn't see that. ठीक है, and that's why mostly it is ignored. जब हम वाटर स्केर्सिटी की बात करते हैं, वाटर स्ट्रेस की बात करते हैं, या जो हमारे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बेसिकली those are on the basis of volume. ठीक है, फलाने मेरा पानी रोक लिया, फलाने वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारी विजिबल है। ग्राउंड वाटर चूँकि एक इनविजिबल कमोडिटी है, so most of the cases in policy making and in political conflicts, it is mostly ignored. So that's why today's theme or this year's theme for the water resources is making invisible visible, यानी to value our groundwater. Before going into detail, I will share the distribution of water on the planet Earth.
बाय नेचर या नेचुरली जो हमारा फ्रेश वाटर है वी आर स्केर्स। जो टोटल वाटर है उसका 97% दैट इज कंस्टिट्यूट्स ऑफ द ओशन। हमारा 97% वाटर जो है वो साल्टी वाटर है, ओशन वाटर है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। अच्छा, फिर पीछे रह जाता है हमारे पास ओनली 3%। 3% जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है, एंड आउट ऑफ दैट 3% 29% is groundwater, 70% is locked in ice cape and glacier। जो ग्लेशियर एंड आइस केप में कन्फाइंड वाटर है, अगेन इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। सो वी आर रिलाइंग ऑन अंडरग्राउंड वाटर विच इज 29%, and stream and rivers which are making less than 1% of the total fresh water। So by nature we are scarce, ठीक है। कुदरती तौर पे जो हमारे पास जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है इट इज लिमिटेड, ठीक है। आउट ऑफ 3% वी आर relying on 29% only for the drinking water। Okay, what's water scarcity? ठीक है, water scarcity किसे कहते हैं? जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वाटर स्केर्सिटी की, इट इज दैट व्हेन द पर कैपिटा एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर इज लेस देन 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। आपके पास वाटर की जो अवेलेबिलिटी जब 1000 मीटर से कम रह जाए तो क्यूबिक मीटर एक पर पर्सन के लिए, एक बंदे के लिए, तो वो रीजन जो है या वो एरिया जो है दैट इज कॉल्ड वाटर स्केर्स। हियर यू कैन सी Here you can see that in the map, Pakistan is falling between the water scarce and water stressed area। Pakistan जो है it is coming in the region where the water is water stressed region, and we are moving towards, or we are at the brink of moving towards water scarce area, ठीक है। वाटर स्ट्रेस से जो है हम वाटर स्केर्स की तरफ जा रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय 2025 पाकिस्तान विल बी एन वाटर स्केर्स रीजन और कंट्री। नेक्स्ट, ओके, व्हाट वाटर स्केर्सिटी इज? द वाटर स्केर्सिटी इज ऑफ टू काइंड, ठीक है। एक आपके पास फिजिकल स्केर्सिटी है एंड द अदर वन इज इकोनॉमिकल स्केर्सिटी। फिजिकल स्केर्सिटी मीन कि जो वॉल्यूम ऑफ द ड्रिंकेबल वाटर है वो कम है, ठीक है। आपके पास जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, जो ग्राउंड वाटर वॉल्यूम है, इट इज नॉट एडिक्वेट, इट इज नॉट अप टू द मार्क टू फुलफिल योर नीड्स। जबकि इकोनॉमिकल स्केर्सिटी जो है इट इज रिलेटेड टू एक्सेस, ठीक है। आपके पास पानी तो है लेकिन वो जो ड्रिंकेबल वाटर है वो एक्सेसिबल नहीं है, या तो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स नहीं है, या इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे रिस्पेक्टेड सना ने कहा कि अब हर बंदा जो है वो चाहता है कि फिल्ट्रेशन प्लांट हो, जो सेफ वाटर एक्सेस है वो नहीं है। सो स्केर्सिटी इज ऑफ टू काइंड, फिजिकल स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक स्केर्सिटी। About 1 billion of the world population is coming under water stress area, and this number is going to increase to 1.9 billion by 2025। Currently 1.6 billion जो है लोग जो है वो वाटर स्केर्स रीजन में रह रहे हैं, and this is going to be increased by 1.9 in 5 years 2025। Okay, what are the associated factors with the groundwater scarcity in Pakistan? So the coming presentation or the rest of the content is related to the groundwater resources and the stress on Pakistan। The first or major threat to the groundwater in Pakistan is the installation of the new wells। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? Okay, Pakistan is the third largest extractor of the groundwater in Asia, and it is extracting about 60 billion of cubic meters per year। पाकिस्तान की जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है इट इज 60 billion, and about 70%, if you look into the pie diagram, about 70% of that extracted amount is going for agriculture purpose, irrigation purpose के लिए है। 8% है वो डोमेस्टिक वाटर डोमेस्टिक यूजेज में जा रहा है, and remaining 24 to 25% that is used for the industrial use। पाकिस्तान में जो ड्रास्टिक कहानी स्टार्ट होती
होती है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की, that was related to the introduction of the SCAR project. SCAR project जो था that was related to salinity control and water logging. उसके नतीजे में क्या हुआ कि जी एक्सटेंसिव ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन की गई, हर जगह पे जो है वो ट्यूबवेल इंस्टॉल की गई, जिनका मकसद ये था कि जी वाटर टेबल जो है उसको लोअर डाउन करना है और उसी फ्रेश वाटर को जो है वो कैनाल सिस्टम में एंटर करवाना है ताकि वो इरिगेशनल जो फील्ड्स में सैलिनिटी कॉज हो रही है ड्यू टू कैनाल सिस्टम इरिगेशन उसको रिप्लेस कर सके. As a result, the number of the tubewells raised from 0.03 million in 1960 to 1.2 million in 2018. 1960 में पाकिस्तान में जो टोटल पब्लिक ऑन ट्यूबवेल्स थी वो 30,000 थी, वो नंबर रेज हो गया 1.2 मिलियन तक in 2018 और 90% of those tubewells were installed in Punjab. As a result, जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल था वो बहुत तेजी से नीचे चला गया. इरिगेशनल कैनाल सिस्टम जो था वो रिप्लेस हो गया अप टू 38% रिडक्शन आ गई. पहले क्या होता था कि जो हमारा इरिगेशनल कैनाल सिस्टम था उसमें हम रिवर्स एंड स्ट्रीम से जो था वो पानी आता था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया ट्यूबवेल से और उसके जो इंक्रीज था इट इंक्रीज अप टू 390% उसमें इंक्रीज आ गया. And the situation was further aggravated by the installation of solar panels. सोलर पैनल्स की वजह से क्या हुआ कि जी वो जो बिलिंग सिस्टम थी वो खत्म हो गई, अड़सड़ी हुई थी बस दा फ्री डे, वो जो बिलिंग सिस्टम था वो खत्म हो गया एंड एवरीवन वाज व्यावजी को गेटो माने ट्यूबवेल लगी गई, नोबडी केयर अबाउट. The second major threat or factor which is responsible for the groundwater scarcity is industrial usage and effluent. जो हमारा इंडस्ट्रियल यूजेज है और वो उसको ग्राउंड वाटर को इफेक्ट कर रहा है इन 2 ways, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड आल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी भी कम कर रहा है, साथ में जो उसका इन्फ्लुएंस है इट इज अगेन डिस्ट्रॉइंग आवर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. पाकिस्तान की जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं दोज आर द मेजर स्टेक होल्डर व्हेन इट कम्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर आर टैंगरी है, घी है, सीमेंट, papers mill, and these are the major consumer industry. जो नया emerging phenomena and which is also a dangerous phenomena in Pakistan which is arising is the mineral water or you can simply say the bottled water. Mineral water bottle is they are installing pumps and they are extracting thousands of liters per day and they are selling us our own resources. Like I said, the groundwater typically they are to your home and community. योगा स्ट्रैटेजी पूरी ट्यूबवेल इंस्टॉल जमा हुए स्टेट का योगा में है and you can see in that figure that with the passage of time by year 2021 this graph is increasing. The usage or extraction of groundwater for making it as a bottled water or mineral water, this trend is increasing yearly in Pakistan. The another major contributor or towards the groundwater depletion is workshops or services. You can say that service stations. With the huge population, our transportation, हर service elements हमारा आ रही है, and those water service stations, they are ruthlessly extracting water and using it. चट्टी गाड़ी using it, पाइपों ना follow करती. So these two industries, water bottling and service station, these two are the you can say the new monsters when it comes to the groundwater depletion. These water extraction or groundwater extraction, these are not only deteriorating environment, our health, but these things are destroying our landscapes. For example, in the picture you can see Katas Raj की जो pond है, back in the 2018, Best Waste Cement Factory those started extracting water for the from the sources which were providing water to the ponds of Katas Raj. Katas Raj वाला जो pond जो अगर बिल्कुल dry जो, then when the Supreme Court ordered to investigate the issue, they found that the groundwater extraction
for the cement factory. Bestway cement factory is responsible for the drying out of the ponds in the Katasraj के जो pond थे उनको जो ग्राउंड वाटर नीचे से सप्लाई कर रहा था वाटर, तो जो बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री थी वो इतनी एक्सटेंसिवली उस पानी को जो था वो एक्सट्रैक्ट कर रहा था कि जो कटासराज का जो पॉन्ड था तालाब जो था विच हैज हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड वो बिल्कुल खुश हो गया. Another picture is depicting the release of effluent from the industry, chemical industry. And those effluents from the industry which contain heavy metals, chemical substances and biological substances, those are contributing again towards the environmental contamination. And the third major contributor is domestic usage. जो पानी हम घर में यूज करते हैं, approximately 56% of the total population has access to safe drinking water. Pakistan, we are still blessed that 56% of our population has access to the safe drinking water. But what we are doing with it, we are wasting about 40% of their water. जो हमारे पास extracted amount है, उसका 40% में हम domestic use में ज़ाहिर कर देते हैं. जैसे कि हमारे कहा कि जी हम ब्रश कर रहे होंगे, हमने लॉन की पानी छोड़ा हुआ है, हम कपड़े धो रहे होंगे, बाल्टी में मुसलसल पानी जो है वो ज़ाया हो जाएगा. जो 40% हमारा एक्सट्रैक्टेड अब वो है डोमेस्टिक वाटर का, वो हम जो है वो अपनी जो रूथलेस और केयरलेस बिहेवियर है उसकी वजह से हम ज़ाया कर रहे हैं. और द फोर्थ जो मेजर फैक्टर है और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स बाय द इंडिया. जो सरफेस वाटर होता है दैट प्रोवाइड्स वाटर फॉर द ग्राउंड वाटर रिचार्ज. हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो तब रिचार्ज होता है ऊपर से पानी की सीपेज हो. तो जैसे जैसे हमारे सरफेस वाटर जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, अल्टीमेटली हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो कम हो रहा है. ओके, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दैट? सॉल्यूशन ये है कि जो हमें एफर्ट्स करने हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे है, हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है. इंडस्ट्रीज को जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है होना चाहिए और गवर्नमेंट का ये है कि जो इन टर्म्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो बनाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें. फर्स्ट जो सॉल्यूशन है दैट इज प्राइसिंग द वाटर. ठीक है, हम जैसे पहले स्पीकर्स ने कहा कि हम पानी वैसे यूज करते हैं जैसे फ्री कमोडिटी. वाई? क्योंकि हम जो प्राइसिंग करते हैं वो बहुत कम है या कहीं पे प्राइसिंग है ही नहीं. वो कोई रस्मापों की प्रीवियस को विस्तार के कारण नहीं करें. ठीक है, सो फॉर द प्राइसिंग ऑफ द वाटर देयर आर थ्री मॉडल्स. एक जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है कि जी आप कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट करें, इट्स ओके. जो सेकंड मॉडल है इट इज इंक्रीजिंग मॉडल है कि जितना आप पानी का एक्सट्रैक्शन ज्यादा करते जाएंगे पर यूनिट प्राइस जो है वो ज्यादा होगी. एंड द थर्ड मॉडल इज डिक्रीजिंग प्राइस कि आप जैसे जैसे आप यूनिट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते जाएंगे वाटर का, उसकी प्राइसेस जो है वो लो होती जाएगी. So among all these, the middle one is the best or greener option. कि जैसे जैसे जितना जितना आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते जाएंगे, यूनिट प्राइस ऑफ दैट वाटर विल बी हाई. और इसी तरह से जो है वो आप अपना जो वाटर की वेस्टेज जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं. Another option is the construction of check dams. What are check dams? Check dams are usually constructed for the catchment of rainwater or you can say at a rainwater harvested. ठीक है, वो जो रेन वाटर है जो चेक डैम्स में आपके पास कलेक्ट होता है, यू कैन यूज इट फॉर इरिगेशन पर्पस. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर से जो दबाव है वो कम हो जाएगा. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है जो आपका इफ्लुएंट वाटर आ रहा है फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अदर डोमेस्टिक यूजेस, यू कैन treat it and then after treatment you can reuse or recycle it for other purposes. Third option is drip irrigation. In Pakistan we are in huge need to replace our conventional irrigation system. जब मुझे कम रिवायती तरीके की we must shift from those to the new technologies like drip irrigation or other water saving option. Drought resistance plantation. As we are moving towards water stress country or we are facing huge impact from the climate change and different kind of consequences, we should
no plant, such kind of plantation, those need little amount of the water. ऐसे प्लांट्स की कल्टीवेशन करनी चाहिए कि जो है वो आपके क्लाइमेट रेजिस्टेंस भी हो और जो पानी का जो यूसेज है वो भी कम से कम है. Another option is the water purification. There are multiple technologies or techniques available जहाँ पे हम saline water को कन्वर्ट कर सके अपने जो ड्रिंकेबल वाटर है बाय डिफरेंट वे, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस है. द पिक्चर इज डिपिक्टिंग हेलियो टेक्निक्स. हेलियो टेक्निक्स में क्या होता है कि सब्लिमेशन प्रोसेस पे इंक्लूड जो साल्टी वाटर होता है उसको ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं. दीज नॉट अलाउड इज द बिहेवियरल चेंज. हम जो है अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड टुवर्ड वाटर यूसेज जो है वो कम से कम करें. बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो जितनी भी तरीके हैं हम अपने घरों में ऐसे फॉसेट्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें पानी का यूसेज जो है वो कम से कम हो. उसके अलावा बाकी इस तरह जो सेंसर्स हैं वॉशरूम्स में कि जो आपका पानी जब आपको चाहिए होता है तब आए, अदरवाइज ना हो. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. Save the water, save the earth. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Very informative, and the solutions are really good. Dr. Hidayat Jonas, welcome, sir. We, as a nation, unfortunately, have a very bad habit. हम किसी चीज़ को तब तक सीरियसली नहीं लेते जब तक पानी सर से गुजर न जाए. We study for exam only when it's the exam night, a few hours are left. We don't take any action. That's what our habit is. But in this case, the stakes are really high. If you do not take this water crisis seriously, the results will be devastating. We need to realize that. And the people sitting here need to inform other people about that as well. Moving on, the next speaker of today's event, one of the most senior member of this university, Professor Dr. Mukhtar Alam. He is working as Dean of Sciences in University of Swabi, basically from Department of Agriculture, has a very diverse set of knowledge, and I usually tell him that Allah blessed you with a very sharp mind. Please welcome Dean of Sciences, University of Swabi, Professor Dr. Mukhtar Alam. वो हमारे उस्ताद की एक बात है कि टीचर इज ट्यून टू स्पीक फॉर 45 मिनट्स. तो पहले से पता करना ज़रूरी था कि कितनी देर बोलना है, ऐसा ना हो फिर वो बात ज़्यादा आगे चली जाए. बट मैडम सना प्लीज, प्रोफेसर डॉक्टर मुकरम शाह साहब, डॉक्टर हिदायत साहब, रेस्ट ऑफ द डॉक्टर निदा, फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, and of course last but not the least our dear students. A couple of months ago there was another program arranged by the Environmental Sciences Department, and that was regarding climate change. And I came here and I said that this is a topic that is very close to my heart. So today again we have chosen a topic that is very close to my heart. So अब या तो ये है कि मैडम कहेंगी कि बस जो भी हम चूज़ करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि दिस इज़ क्लोज टू माई हार्ट, बट दिस इज़ क्लोज टू माई हार्ट. यहाँ पे मैडम ने भी बहुत अच्छा डेटा शेयर किया, डॉक्टर निदा ने भी बहुत अच्छा डेटा शेयर किया, खुद नाज़िर शुमा मैडम ने बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा शेयर किया. लेकिन आई एम फ्रॉम अ जनरेशन हु हैज़ एक्चुअली सीन ऑल दिस. ये जो हमारे यहाँ पे करीब नहर है, this used to be, I mean, a similar nahr is right next to my house. So this water used to be drinkable, potable, drinkable. But now look at it, पूरे 20 किलोमीटर में सूरज की लाइनें जो आके उसी में खुलती हैं. So there are things that actually I have seen. ये तो pollution के हवाले से हो गया, कुछ scarcity के हवाले से भी बात हो रही है. ये वाटर हमारी लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ मुख्तलिफ लोग आके बात करेंगे और एंड एवरीबडी विल हैव एक्चुअली अ डिफरेंट टेक. सो मैं अपने हिसाब से इस पे सोचता हूँ
कि अगर आप वाटर को देख लें तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, इंसान के लेवल पे आप इसको देख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आवर बॉडी इज 60 to 70% वाटर, आवर ब्रेन इज एक्चुअली ऑलमोस्ट 90% वाटर, the entire chemistry of our body is actually dependent on water, and so on. So this is for a single person. And then you look at a macro level, बड़े लेवल पे देख लें तो जो भी आप दुनिया में कहते हैं क्लाइमेट चेंज, उसमें वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिस वे और दैट, पानी कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, आइदर वे उसमें बड़ा हिस्सा है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा हमारे दोस्त ने, कि पानी किस तरह से कहाँ से जाता है। सो अगेन समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हर लेवल पे इम्पोर्टेंस उसकी अपनी अपनी जगह पे। हम जो पीते हैं वो तो है ही वाटर ऑब्वियसली, लेकिन ज़रा सोचें जो हम खाते हैं वो क्या है, वो भी वाटर है, बिकॉज इट्स एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू H2O plus CO2 in the presence of sunlight and chlorophyll, and then it's converted to glucose and oxygen. So that's the entire story. So again water is important there as well. एक तीसरे लेवल पे मैं इसको देखता हूँ, और सुफियान ने बड़ी अच्छी बात की है कि नॉलेज की दो किस्में, एक एक्वायर्ड नॉलेज है, एक को जो भी मुख्तलिफ अल्फाज कहेंगे डिवाइन नॉलेज है, रिवील्ड नॉलेज कहेंगे, ठीक है। जो बिलीवर लोग होते हैं वो रिवील्ड नॉलेज पे है, उसका भी एक बहुत बड़ा उसको रोल समझते हैं। तो जो एक्वायर्ड नॉलेज के हवाले से ये सारा डेटा जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक्वायर्ड नॉलेज वाला डेटा है। इन्होंने रिवील्ड नॉलेज की एक मिसाल दी, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इवोल्यूशन। सो उसमें अल्लाह ताला बड़ी क्लियरली कहता है कि हमने सब चीज़ों को पानी से बना, हर वो चीज़ जो जिंदा है। डॉक्टर साहब करेक्ट मी, आयात को मनो वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्यिन, वजालना मिनल माए, वो हमने बनाया पानी से, कुल्ल शैइन हर चीज़ को, हय्यिन जो जिंदा है। अफला तुमिनून, अब ऐसी हालत में भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। सो जब हम साइंस को देखते हैं एक्वायर्ड नॉलेज को, वो भी कहती है कि देयर यूज्ड टू बी अ प्राइमेवल सूप बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स आए जिसको आज हम DNA या RNA कहते हैं, उससे ज़िंदगी शुरू हुई है एंड इस तरह आगे बढ़ती गई है। सो ये तो उसको हो गई इम्पोर्टेंस के हवाले से बात। लेकिन एक चीज़ जो इसके अलावा है वो ये है कि हम अक्सर चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखें, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम दोस्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम माहौल को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हवा को ले लेते हैं, बिकॉज इट्स फ्री, सो वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी अज्यूम कि इट्स हियर टुडे एंड इट विल बी हियर टुमारो एंड इट विल ऑलवेज बी अराउंड with the same quality and the same level of abundance. But that's never true. It's never true. And the same applies to water. It will not remain abundant always. It has never remained. आज से 200 साल पहले इंग्लिश में डॉक्टर साहब मैडम शायद पढ़ती होंगे इंग्लिश पोइट्री, तो उसमें कॉलरेज की एक लंबा पोएम है, लेकिन उसमें एक जगह पे कहता है कि वाटर वाटर एवरी ईयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। आजकल हम उसको वैसे कहते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ओरिजिनल कुछ और है, लेकिन वो पुरानी अंग्रेजी है, वो ज़रा डिफरेंट है। तो उसमें उसने यही कहा है कि पानी तो हर तरफ है, लेकिन पीने के लिए कुछ भी नहीं। अब इस चीज़ को हमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम समंदर से 1700-1800 किलोमीटर दूर बैठे। तो एनीवे ये है कि पानी जितना अवेलेबल है, जितना पानी है उसमें काबिल इस्तेमाल कितना है, अवेलेबल कितना है, ये डेटा आप लोगों को काफ़ी सारा मिल गया। सो आई शुडंट स्पीक एनी मोर ऑन दैट। लेकिन थोड़ी सी एक दो चीज़ें जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये, मैं थोड़ा सा अभी नेट पे देखा मैंने, तो एक बहुत सबक आमोज़ किस्म का वाक़या पानी के हवाले से उसमें ध्यान में आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे
तो एक सहाबी जिनका नाम साद, वो वज़ू कर रहे थे। तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वही मैं पिक कर लेता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि साद, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेस्टेज इज़ गोइंग ऑन, ये तुम क्या ज़ाया कर रहे हो? तो सहाबी ने उनसे पूछा कि जी क्या वज़ू करने में यानी नमाज के लिए तैयारी करने में भी वेस्टेज का कोई एलिमेंट है, कोई कंसेप्ट है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि यस, वेस्टेज का तस्वुर तो हर जगह पे है, चाहे आप बहते हुए दरिया के किनारे भी बैठे हुए। सो आई थिंक इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि नमाज के लिए भी आप पानी ज़ाया नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कहीं और कहता है कि जी कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाएं पिएं और इसराफ ना करें। अब अनफॉर्चुनेटली उसको इस माने में हम ले लेते हैं कि खाए पिए और परवाह ना करें, खाएं पिए और ऐश करें, तो उस माने में। तो कहने का यही था, मैडम ने कुछ स्टेप्स बताए कि जी पानी को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसका एहसास किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा मैडम ज़्यादा वो टेक्निकलिटीज़ की तरफ से नहीं बल्कि उन चीज़ों की तरफ इशारा कर सकता हूँ जो आप ख़ुद करते हैं, जो खुद मैनेज हो सकता है। एक चीज़ आप जो मैंने कही कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वज़ू में पानी ज़ाया करने पे पाबंदी लगाई है तो कपड़े धोने में, गाड़ी धोने में, घर धोने में, उसमें तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। एक और चीज़ जो आजकल जिस पे काफ़ी मैडम ने भी जिक्र किया, ADP के प्रोजेक्ट भी चलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट उसको थोड़ा ज़्यादा इनकरेज कर रही है, वो है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हवाले से क्या हो सकता है। तो ऑफ कोर्स लॉट कैन बी डन। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पे कुछ काम उसमें कर सकते हैं। कहने को बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो जो किसी ने कहा है ना कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते कि होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? See, there is one thing I do. I'm not very religious, लेकिन there is one thing I do, and I hope you people do it at least one day. या हो सकता है आप लोग करते हो या बहुत ज़्यादा करते हो। मैं सबसे पहले काम सुबह ये करता हूँ कि मैं पानी पीता हूँ, एक गिलास, 1 glass एवरी मॉर्निंग। उठता हूँ तो 1 गिलास पानी पीता हूँ, ब्रश करता हूँ, एंड आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर दैट 1 glass ऑफ वाटर। बाकी मैं भूल जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ, अल्लाह की नेमतों को भी भूल जाता हूँ, बहुत चीज़ों को, लेकिन वो समहाउ वो सुबह 1 गिलास पानी में पीता हूँ ना, उसके साथ मैं ज़रूर मेरे दिल में आता है कि जी थैंक गॉड। ये जो मैडम ने डेटा प्रेजेंट किया उससे आप अंदाज़ा लगा लें, आप सब लोगों ने भी सुबह 1 गिलास पानी पिया होगा या अभी तक सुबह से लेके, लेकिन इट्स अनबिलीवेबल कि दुनिया में तकरीबन 2 अरब लोगों को ये 1 गिलास पानी अवेलेबल है। दिस 1 glass इज़ नॉट अवेलेबल। वो जो हम फ्लडिंग करते हैं उसको तो छोड़िए। सो दीज वर सम रैंडम थॉट्स दैट एक्चुअली केम टू माई माइंड, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लेते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच मैडम, मुझे भी आप लोगों ने मौका दिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ज़माना था कि वक्त के साथ साथ एक दौर का एक थीम होता है। सी वी टॉक ऑफ दीज थिंग्स कि ये स्पेस एज है, ये न्यूक्लियर एज है, ये इंडस्ट्रियल एज है, ये एग्रीकल्चरल दौर है, सी ये क्लाइमेट का दौर है, और फिर क्लाइमेट में जो है ना वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, इन्वायरमेंट में भी आप देख लें, जिस चीज़ से स्टूडेंट ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, आपको तो खैर पता ही होगा, तो वो होता है कि जी किसी चीज़ का कार्बन फुटप्रिंट। बट नाउ इट्स इन एडिशन टू कार्बन फुटप्रिंट, नाउ इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है वाटर फुटप्रिंट। अगर आपका एक जोड़ा शूज़ का बनता है, इसका वाटर फुटप्रिंट क्या है? मैडम ने इनडायरेक्टली बता दिया कि टेनरी इंडस्ट्री में इतना पानी यूज होता है, लेकिन एक जोड़ा चप्पली बूट बनाने पे पानी भी यूज़ होता है। कितना पानी यूज़ होता है? एंड यू विल बी सरप्राइज कि समटाइम्स एक जोड़ा शूज़ के पीछे जो है ना 200 गैलन का पानी होता है। सो वाटर फुटप्रिंट की बात हो रही होती है, वाटर वॉर्स की बात हो रही है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई है जहां इंडिया फॉर एग्जांपल मिसाल पहले भी आई, वो ऐसा डैम बना सकता है
कि पाकिस्तान ड्राई हो जाए। द सेम गोज फॉर अफगानिस्तान से जो रिवर आता है, वहाँ ऐसा डैम बन सकता है कि वी विल हैव प्रॉब्लम्स। सो इस पे ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान भी चुप तो नहीं बैठेगा, कुछ तो करेगा। तो अब तो बातें हो रही हैं वाटर वॉर्स की, वाटर फुटप्रिंट की, ठीक है। तो इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। मैडम ने तीनों मैडम्स ने बात की कि जी 2040 तक ये हो जाएगा, 2025 तक ये हो जाएगा, 2030 तक ये हो जाएगा। हो जाएगा को छोड़, आई एम फ्रॉम अ जनरेशन, और कुछ लोग कुछ किसी हद तक आप लोग भी इसको शेयर करते होंगे कि वी हैव सीन इट हैपन। सो मालूमात बहुत सारी हैं, लेकिन बस चलते चलते सिर्फ ये कहता हूँ कि मालूमात और एहसास में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मालूमात ये होती हैं कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मुझे बहुत सारी मालूमात है, आप लोगों को बहुत सारी मालूमात है। एहसास डिफरेंट है। और मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर कोई मुझे कहे कि साउथ अफ्रीका में जहाज़ क्रैश हो गया, सो दिस इज़ मालूमात हैं, हो जाते हैं, जहाज़ क्रैश हो जाते हैं। अगर कोई मुझे कहे कि जो साउथ अफ्रीका में जहाज़ क्रैश हो गया उसमें आपका फ़लाँ दोस्त या रिश्तेदार या यू नो समबडी इवन क्लोजर देन दैट, वो भी सफ़र कर रहा था, तब बात आके दिल पे लगती है, फिर एहसास होता है। सो मालूमात तो बहुत सारी हो गई, आई होप कि थोड़ा सा एहसास हम सब में आ जाएगा। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जब सुबह सुबह एक गिलास पानी पिए तो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें। आई एम श्योर दैट विल हैव एन इफेक्ट। कंग्रेचुलेशन मैडम ऑन Our next speaker in today's seminar is Professor Dr. Sayyid Muhammad Mukarram Shah. He is working as Pro-Vice Chancellor, University of Swabi, basically from Department of Pharmacy. He is an individual who is taking a very keen interest in the society and events like this, supporting them when he was working as an acting Vice Chancellor, and the events that happened that I mentioned earlier happened in this tenure. Please welcome Pro-Vice Chancellor, University of Swabi, Professor Dr. Sayyid Muhammad Mukarram Shah. HOD Department of Environmental Sciences, faculty members and learning students, Assalamu alaikum. And I hope that you have enjoyed today's seminar. Dr. Mukarram was sitting behind me, and he's a very good habit. He knows the thing. He's very a man of capture, and he knows a lot of things. And another beauty of his personality is that he can efficiently utilize those things. So he summarized the whole event, the whole seminar. I think that such kind of seminar should be continued because they give us a lot of information. Not only information, is rightly that Dr. said that it sensitizes us. It sensitizes us towards some of the core issues. And I think, taking a little part of his speech again, that he said that the topic is close to my heart. So a brief, I can say that event I'm sure we're here like that. When I was working as an assistant professor in the University of Malacca, उस टाइम डॉक्टर तरीन इफ्तिखार से शाह वो गवर्नर थे। तो हमारी फैकल्टी बहुत लिमिटेड थी और एक इवेंट पे हम सारे तकरीबन एक ही टेबल पे अरेंज हो गए एंड वी वर एंजॉयिंग द टी। सो एक फैकल्टी मेंबर आया, उसने चिकन पीस उठाया, उसने कहा सर ये चिकन पीस मुझे बहुत पसंद होते हैं। उसने उससे तभी थोड़ी सी दी, बेटा जी ये चिकन पीस हर एक को पसंद होते हैं। तो एनवायरमेंट का जो इशू है हम सबको मतलब हमारे दिल को लगती है कि कॉमन टू ऑल अस। हर सेक्टर का बंदा इससे इफेक्ट होता है, उसकी लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी। जिस तरह कुरान मजीद में पूरी इस सिनारी को एक सबक किया गया है कि अल्लाह ताला ने सारी जो हयात है, जिंदा चीज़ें हैं, उसको पानी से पैदा किया। और पानी ना हो तो वो जिंदगी इसकी मतलब पॉसिबल नहीं है। अब ये पानी जो जिस फॉर द सेक ऑफ ड्रिंकिंग, जिस तरह एक्सप्लेन किया गया कि हमारी हाइजीन, हमारी क्लॉथिंग, हमारे शूज़, हमारे जहाँ हम बैठते हैं या जो चीज़ हम यूटिलाइज करते हैं, अगर हम उसको साफ ना रखें
जिसमें मोस्टली वाटर यूज होती है, ठीक है, तो हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी लाइफ इंडेंजर्स हो जाएगी. So for some of that for all these kind of things, all sector of life, we see that the water is very much important. निदा ने एक स्लाइड शो किया कि सोलर पैनल लगी हुई है, सेट ऑफ ट्यूबवेल, तो वो भी हमारी ज़रूरत है एग्रीकल्चर को, क्योंकि हम बच्चे जरिए जो है फॉर एरिया जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, लेकिन हम उसको मतलब उसको हम आबाद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर उसमें ला सकते हैं थ्रू दिस सोलर सिस्टम हमको. लेकिन हमें फिर ये देखना पड़ता है कि हम जो चीज़ यूटिलाइज कर रहे हैं उसका आउटकम क्या मिलता है, हमें बेनिफिशियल आउटकम मिल रहा है या बेनिफिशियल आउटकम नहीं मिल रहा. सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, बट आई विल quote one of the hadith sharif. Do not waste even if you are performing evolution on the bank of a fast flowing large river. ये तकरीर शरीफ की हदीस शरीफ है जिसमें में उसके मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है. The Prophet himself would perform evolution with just 1 butt of water equivalent to 2 to 3 liters, and take a bath with 1 sap of water equivalent to 3 liters. So another area, एक दूसरा शरीफ का मफहूम है, जो लोग पानी ज़ाया करते हैं तो वो गुर्बत की करीब हो जाते हैं. तो सब हमारी जो जितनी भी दीन तालीमात है, अगर हम उस पर अमल करें तो जो डिज़ास्टर हम यहाँ पे शुरू हुआ है, जो आने वाले वक्त में जो मसाइल पैदा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो हम उससे बच सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ हैबिट्स थोड़ी सी चेंज करें. जिस तरह डिस्कस हुआ कि हम ब्रश करते हैं, हम गाड़ियाँ वॉश करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हम जो वाटर यूज़ करते हैं, अगर हम थोड़े से सेंसिटाइज हो जाए कि हम डेली तकरीबन हर स्टूडेंट आज से ये याद कर ले कि आई विल सेव अबाउट 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर, तो थिंक अबाउट दैट हाउ मच वाटर कैन बी सेव. अब एनालिसिस ये है कि 15 से 25 एज के जो हमारे नौजवान हैं, अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन. तो थिंक अबाउट इट, मल्टीप्लाई करें इसके साथ 67% के साथ 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर पर डे, तो हाउ मच वाटर वी कैन सेव. एंड आई रिक्वेस्ट टू द स्टेक होल्डर, मैडम ने डंडे की बात की कि हम डंडे से समझते हैं, तो ही इज अ स्टेक होल्डर इन दिस केस, representative of the government. She may put some of the recommendation of this seminar to his ministry or his in Dubai or his secretary, whatever it is. कि अगर हम इस अवेयरनेस को स्कूल लेवल तक ले जाएं, हमारी करिकुलम का थोड़ा सा इसमें एक पार्ट आ जाए, स्कूल लेवल से हम ये इसमें इंडल्ज करें, ये गुड हैबिट्स उसमें एडिशन कर लें, तो इंशाल्लाह ये अवेयरनेस आगे और भी बढ़ेगी. And I think that such kind of seminar should also be arranged in school and college level. So at the end, I will extremely thankful for the invitation today's seminar, and congratulations as well. And hope that such kind of heart-touching title seminar will be attended. Thank you very much. Stay blessed. The Bluetooth device is connected successfully. Specifically, Mr. Fazl Jalal and Environment Green Club as a whole prepared a documentary for the audiences to know about the importance of water. Please enjoy the documentary. Life. Humans, animals, plants all depend on water. Water to me, well, it's everything. It's our food, our energy, and even the clothes that we wear. Water to me is a scarce resource.
Water. It's life's most basic need. But there's a water crisis in our world right now. Seriously, a crisis. Nearly 1 billion people live without clean drinking water. It's happening all over the world, especially in developing areas of sub-Saharan Africa, Southeast Asia, and Latin America. It's a water crisis because it starts with water. But water affects everything. Education, health, poverty, and especially women and children. Let's look at a family caught in the water crisis. It's likely they live on less than $1 a day. When they're thirsty, they can't just turn on the faucet for a nice cold glass of water. They don't have a faucet. Instead, the women and children go off to collect water. Many walk up to 3 hours a day to the nearest swamp, pond, or river to gather water that's been sitting out in the open, exposed to all kinds of germs. Time spent gathering water is time they can't spend learning to read, write, earn an income, or take care of their family. Some women in sub-Saharan Africa spend more time collecting water than any other activity they do in the day. And the walk isn't just hard, it's dangerous. The women are alone and burdened with 40 pounds of water. Many get hurt. Sometimes they're even attacked. When they make it home, the little water they've collected isn't clean. Some families know their water is contaminated with germs that cause diarrhea, dehydration, even death. But what choice do they have? Kids, especially babies, are affected most by these germs. About every 19 seconds, a mother loses one of her children to a water-related illness. And each day, almost 1 billion people are living this way. Until they get a little help. The water crisis is solvable. There are solutions. Some are brand new and innovative, like water filtration systems. Some are age-old, like drilled or hand-dug wells. These solutions bring clean water much closer to the people who need it. A safe water project near a village restores hours each day to a person's life. This time, it's opportunity. It's freedom to go to school and get an education, to work or start a business, to raise a family. Africa alone could save 40 billion hours each year. That's the entire annual workforce of France. Clean water means less disease. That's less money spent on medicine, which means more money for books and school uniforms. And if the water project is built near a school, it can increase attendance, especially among young girls. The water crisis is vast, but we can solve it. Just $20 can provide one person with access to a clean water project in their village. And this will mean more than clean water. Because water changes everything. Let's take a closer look at the many ways of conserving water. I have some ideas. Go ahead, Bubbles. We can turn off running water when we don't need it. For example, when we brush our teeth, we can turn off the tap. We can also take shorter showers. Another way is when washing dishes, we can first soak them and then open the tap to rinse off soap from the dishes. I have one. When washing fruits and vegetables, we can do it in a bowl of water instead of under the tap. These are great examples. Also, you should check your pipelines and water storage tanks to see if there are any cracks. Water can leak from these cracks and would be wasted, so you should make sure you fix any broken pipes or tanks. Mrs. Coco, these are things we can do at home. But what about the big factories and companies that use water? How do they save their water? Well, paper mills, chemical industries, and other big factories can conserve water in 3 ways. They can reduce their water usage by using less water in their work. Secondly, they can reuse water. If they have used water in one process, they can use it again for another process where possible.
The third is through recycling water. Industries that use water from our process can clean that water and then use it for other work. After all those speakers and the documentary, we do realize the importance of water and how important it is to save water. And to those of you who still don't understand the importance of water, 10 or 15 days from now, when it's Ramadan, an afternoon, and in this scorching heat, when you are thirsty and you cannot drink water, imagine those areas like Thar, etc., whose every day is like that. Water is not accessible to them and they cannot drink water, despite that it's not Ramadan, it's every day of their life. Maybe it will help you realize how important water is. Before we move on, let's give a huge round of applause to all the speakers for providing such a Thank you very much, individuals, volunteers who work for that. We come in front and you look at us and you think they did it, but there are people at the back who are actually doing all the work. And we need to appreciate them. There's a certificate distribution for all the people who work making this seminar possible. For the distribution, may I please invite on stage Wadi Pro Vice Chancellor, Dean of Sciences, Dr. Hidayat, please join us on stage for distribution of certificates.